what do you want in your life? Do you really want to transform your life? क्या आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स। अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला के ऊपर आज हम बात करेंगे। सक्सेस सभी लोगों को चाहिए, बट व्हाट इज सक्सेस इज ऑल अबाउट, एंड अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला कितने लोगों को जानना है? जस्ट टाइप दैट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रियली वांट टू लर्न दैट अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। डियर फ्रेंड्स, फॉर द सक्सेस व्हाट डू यू वांट रियली? आपको सच में क्या चाहिए? आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सक्सेस के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ पावर एंड सेकंड इज अ knowledge. Amazing. If you just say me or if you just say yes, then of course you are actually open to learn. Wonderful. Thank you so much. Wonderful. So for the success, this two pillars is very important. One is the power and one is the knowledge. See, पावर इट्स अ वेरी इमोशनल वर्ड एंड पावर को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और उसका इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पावर मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड इट इज अबाउट you have that power and ability to achieve whatever you want in your life. But if you have only power and if you don't have knowledge, you will not get the results whatever you want in your life. Yes or yes, dear friends? So there is a two pillars is very important. Knowledge is a power, and power is required to uh, I can say the encashing the knowledge, right? So these two pillars are very very important, dear friends. And today through these two pillars, let us consider these two pillars are there that are there available in our life. Knowledge and the power that is available in our life, we consider this way and we will discuss the ultimate success formula, dear friends. So I'm sure you all are ready, as you already written yes, me in the, you have already participated, you have written the me in the comment box. Just type that I'm ready, dear friends. So for this success sabhi logo ko chahiye, but there is a different definition of success. But what generally successful people do, what generally successful people do to achieve their goal, वो अपने गोल को अचीव करने के लिए जनरली क्या करते हैं? दिस इज व्हाट द फोर steps I will first share with you, dear friends. And जो लोग बिल्कुल भी अपने गोल अचीव नहीं कर पाते, तो ये स्टेप्स में से कोई एक स्टेप्स वो चूक जाते हैं. Now pay attention and understand this four steps of the success, dear friends. And I'm sure you are very much curious about it. And even check yourself. This is a checklist whether maybe are you following these four steps. If yes, just just tick mark each step जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे यहाँ पर. और जो आप मिस करते हैं, प्लीज जस्ट कंप्लीट दैट, उसको फुलफिल करेंगे, देन आपका पूरा एक लूप कंप्लीट हो पाएगा, राइट? सो फर्स्ट स्टेप टू अल्टीमेट सक्सेस इज the successful people generally do is define precisely what you want. That is a very 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 important. Generally we say, even in the affirmation also I used to teach, is just be very precise, be very specific, and it should be your personal statement. For even the affirmation, if we construct the affirmation with the 3P principles, I used to teach this. So are you exactly means clear what do you exactly want in your life? सी जितना जितना भी आपको लाइफ में मिला है, वो सब कुछ आपकी क्लैरिटी के बेस पर मिला है. सिंपल, इवन इफ यू ऑर्डर द पिज्जा, यू आर वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट पर्टिकुलर पिज्जा, टाइप्स ऑफ पिज्जा, एंड यू रिसीव दैट स्पेसिफिक पिज्जा. आई एम जस्ट टॉकिंग द सिंपल एग्जाम्पल. Even in the Google search, you are very precisely written some keywords or single keyword, and you will get the result very precisely based on that keyword. Yes or yes, dear friends? So we are very clear somehow in day-to-day life, in the time being task, but what about that whole life big picture? Are we clear
precisely what we want in our life. We are clear, but it is always vague, it is always general. So it is a vague and general and sometimes jargon words also, and that's the reason you will not receive what you want. Example, I want many money, so much money, and I want happiness. So happiness has no frame. Many monies or so much money has no frame, with no calculation, and specific things are there. I want good health. So good health has no definition. Your subconscious mind doesn't understand. Your subconscious mind understand very specific, precise, and very clear cut pictorial language, or the very specific numerical language also, so you should tell very specific things to your subconscious mind. You need to order, in your universe and in your subconscious mind. There is no limit. Like for you, suppose 500 crores is a big amount, or 5,000 crores is a big amount, or for someone 50,000 crores is a big amount. For universe and for your subconscious mind, nothing is big and small, nothing is late and fast, delay and fast. Everything is possible, provided we should be very clear. We should define precisely what we want in our life. Are you clear? Just type that I'm clear for the first step. Every successful people are successful just because they are very clear what they want in their life, no matter what. Now it is your time. Can you declare or define precisely what you want in your life? Just participate here, use the chat box, and share what do you want in your life. If you can share, I can help you. I can maybe edit or alter your affirmations or your thought, if it is needed. Wonderful. So that is the first step. So now you have maybe the questions, maybe like should we define in every area what I want, like a happy and successful life. But happy and successful life for, in terms of health, wealth, relationship, and career. So in every area we should define. Yes, you should define in every area. Suppose in the health area, what exactly you want. Example, body weight, your inch loss if you want. So how many numbers of inch loss you want, how many numbers of weight, a kg you want to lose, or anything very precise for the spiritual area goal or for the relationship. So in career or in terms of money, so very precisely you should declare. That is a very important thing. See, all successful people are very clear what they want, and once this is the first step and very important step, once you are clear with it and you are going to declare it, then the second step, take the actions. How many of you are agree that actions is important? Only knowledge. Yes, knowledge is a power. Power and knowledge, two pillars are there for ultimate success. But if you're not going to take the actions, you will not achieve it. How many of you are aware कि हमें healthy food खाना चाहिए for अच्छी health के लिए? But if you are aware, but if you are not taking action to take the healthy food or healthy diet a day, then you will not remain healthy. Yes or yes, dear friends. So second step is very important. Take the actions. See, otherwise we are the daydreamer person. We dream, we think a lot, but we will not take the action. We will not implement, and we will not get the results. So as soon as you are clear what you want in your life, just take the action. And believe me, how many of you have attended my 9 secrets of subconscious mind? Believe me, if you are even not clear about your actions, how should I take the actions? How should I get this, whatever I want? I'm clear precisely whatever I want. Believe me, if you use this 9 secrets, let me share my personal example, dear friends. I started writing because just because of this lockdown, I gained 5 kg extra weight on bodily weight. So I decided, I started writing with this 9 secrets. How many of you have attended my 9 secrets of subconscious mind? If you are aware about my 9 secrets, I have started practicing with the adding gratitude and just my one standard weight
I'm reducing 5 kg and all this. And you won't believe, I was just writing. At that time, I could not control on my diet, and diet at least anyhow I could control, but I could not do the exercise properly because I have my personal gym trainer, and just because of lockdown, uh, I could not access my gym and personal trainer, so could not do my own the disciplined way जैसे वो exercise होनी चाहिए. Then when I started using these 9 secrets, actually I got this idea. And if you are practicing 9 secrets, universe will show the path and you can take the actions. My purpose to share this is with you. If you are not clear with the actions sometimes, then just believe, have a faith and practice 9 secrets. You will get the some intuitions or some hunches or some ideas, and it surprised you कि ये कैसे हो गया. And I get the idea. I call the personal trainer on at my home, and now I started doing it. So अपने आप हो ही जाता है, ये सारे actions हमें मिल ही जाते हैं, dear friends. So actions, if you are clear, just jump, take the actions. If you are not even clear the actions I'm giving to additional help is just start meditating using 9 secrets. Write down the affirmation, whatever you want precisely, create the affirmation and use the 9 secrets. You will get even the actions plan intuitively also. Believe me, that is called the magic, right? So just type that magic, and magic happens like this way only. I can share you a lot of magic happens in my life. I can share you, but this is just in a short I have shared you, so you will get the idea. Now the third step, right? The third step is to develop the sensory acuity, like to recognize the kinds of response and the results you are getting from your actions. Like a successful people, they are very clear what they want, they take the actions, and when they take the actions, sometimes happens when they take the actions, there are the 2 possibilities. First one possibility is what, कि वो एक्शन के बेस पर उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, और हो सकता है दैट एक्शंस के बेस पर रिजल्ट्स ना मिले, कुछ गलत जगह पे डिफरेंट साइड पर रिजल्ट प्रोड्यूस होने लगे. सो इन दिस केस, just develop the sensory acuity, dear friends. Sensory acuity means ki whether I am going in a right direction or not. Be very much aware. Experience all the time in the phase of action. Action की phase में होते तब पूरा experience करे, aware रहे, and develop this sensory awareness कि जहां से आपको पता चले, and learn from the all experiences. Example कि आपने कोई try किया, you are a sales person, आपके पास 100 सेल्स का गोल है विद इन 3 months टाइम, एंड आप उसके लिए कॉलिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. देन यू आर अवेयर कि ओके, यू कैन नॉट, आपको अपने गोल को चेंज नहीं करना है, बट यू नीड टू चेंज योर पाथ, एंड दैट इज अ फोर्थ स्टेप, दैट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी. That is the fourth step, is to develop the flexibility to change the behavior. So if you are just track your record like a milestone, हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, तो we have a milestone so that हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है. So check your वीकली प्रोग्रेस कि मैं जो मेरा फाइनल गोल है और मैं अभी कहाँ पर जा रहा हूँ, ये वीक में मेरा सेल्स कितना हुआ. सेल्स नहीं हो रहा है तो यू कैन नॉट ड्रॉप दैट गोल, बट यू शुड सी लाइक मैं प्रॉपर ऑडियंस को अप्रोच कर रहा हूँ या मेरा ऑडियंस गलत है. ऑडियंस सही है तो मेरा अप्रोच सही है, मुझे मेरी डिलीवरी, मेरे कंटेंट में चेंज लाने हैं, मेरी ऑफर में चेंज लाने हैं, मेरी प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं, प्रोडक्ट में कुछ एडिशनल देना है. So you know that the fourth step is there for the successful people. Develop the flexibility to change the behavior जब तक गोल को आप हिट ना करें. And that's where you will get the success. What is the success is basically, do you know dear friends, it is nothing like कि आपको एक आपने आंख खोली और आपने आज तय किया और मिल गया. सक्सेस का मतलब यही है कि कांस्टेंट इट्स लाइक एक कहते हैं ना कि आप कांस्टेंट हीट करते जाते हैं, एंड वन टाइम यू विल हिट द गोल लाइक
आई कैन से इट्स लाइक अ क्लॉक का जो होता है पेंडुलम काइंड, एंड पेंडुलम की तरफ अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट चला जा रहा है कांस्टेंट, इन यू आर हीटिंग ऑल द टाइम, एंड वन फाइन डे यू कैन हीट दैट पेंडुलम यू नो एट द शार्प वे जहां पर आप शूट करना चाहते हैं. तो इट इज लाइक अ सक्सेस. सक्सेस का मतलब है कांस्टेंट एफर्ट्स. यू नीड टू चेक इन द स्टेप नंबर 3 कि कौन से फॉर्मूलाज नहीं चले, or what I could learn, like suppose ki 9,999 times Thomas Alva Edison learned that these are the way bulb nahi banta hai. So this is the way you can learn. So that is the third step. You need to learn from your failures. You need to change and find the new path, new pattern all the time, every time, जब तक आपको हिट ना करे पेंडुलम का जो कांस्टेंट मूवमेंट में है, एंड यू आर हीटिंग ऑल द टाइम, and one fine day you will hit that successfully, and again keep trying. Success is nothing like ki it is a destiny, ek baar aapko success mil gaya. It is always under construction. It is always in a constant process. Once you hit, there is another goal, always there in the every area. But the thing is, you need to go through with this 4 step. Generally what happen in the third step, people are not able to identify and not able to learn from that failure, and that's the reason they drop the idea. They will start new again, they will drop the idea there also, because this is their habit and pattern to give up. That is their habit, they will adopt unknowingly. In this pattern, actually this 4 steps, आपको आपकी पैटर्न ये करनी है कि नेवर गिव अप, फाइंड अ न्यू वे. हमें एवरेस्ट चढ़ना ही है तो चढ़ना है. मे बी मैं ये वे से नहीं चढ़ पा रहा हूं तो दूसरा वे है, तीसरा वे है, बट मुझे मेरा जो गोल है एवरेस्ट का समिट को करना है, तो मुझे कैसे भी करना है. दैट्स द the success, ultimate success formula, dear friends. So please adopt. This is a very, very, very important. And third step is very important. Third steps, if you are very much clear. And the fourth step, you need to adopt the flexibility. Like so many people are very rigid. Okay, I can do this things with this way only. पहले सदियों से ये चला आ रहा है, काफी मेरे पीढ़ियों से मेरे दादाजी और वो लोग ऐसा काम कर रहे. कॉर्पोरेट में ये सिस्टम से ही चला आ रहा है, यही तो ISO स्टैंडर्ड से ही काम होता है. Possible है, sometimes you need to do out of the box to achieve your goal. Of course, with values and ethics, you will learn today with the 7 traits also. That is a part and topic of this course also, dear friends. So are you clear with these 4 steps? Just type that got it. Just simply type that got it. Dear friends, see, the successful people are, giving their constant efforts, and they are developing the flexibility to change their behavior to achieve their goal. They are not changing their goal. They this change their behavior, change their that path and strategy to achieve their goal. And when they change their attitude, behavior, and path, they are always maintain their ethics and values also, dear friends, right? So this is a very, very important part. And I'm sure, dear friends, जितनी भी success हमने और आपने ली है, यही unknowingly या knowingly ये 4 steps के through ही ली है. Yes or yes, dear friends? Simple. Suppose आप अपने घर से एयरपोर्ट जा रहे हैं, एंड आपने एयरपोर्ट के आपकी फ्लाइट है और आपको पता है कि रास्ते में ट्रैफिक और सबका मार्जिन लेते हुए आपने 4 आवर्स या 3 आवर्स, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, आपने जर्नी शुरू करी है. एग्जाम्पल. सो आपका एयरपोर्ट पर जाना तय है, आपकी जर्नी तय है, और आप एयरपोर्ट के रास्ते पर जा रहे हैं और बीच में ही डाइवर्जन आया. जो रास्ता था वहां पर डाइवर्जन का बोर्ड है और आपको दूसरे रास्ते से जाना है. सो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम डाइवर्जन को फॉलो करेंगे, और जो रास्ता हमें डाइवर्ट किया है, जो रास्ते में हमें डाइवर्जन दिया है, वो रास्ते से हम जाएंगे. यस और यस. बट एनीवे वी विल रीच एयरपोर्ट, वी विल रीच अवर डेस्टिनेशन. सेम वे हम हमारी लाइफ में करना है. एंड वी लर्नड कि ओके, अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर टाइम पर आधा घंटा जल्दी पहुंचे, क्योंकि डाइवर्जन वाला जो रास्ता था वो लंबा था एंड वो ट्रैफिक वाला भी था.
तो थैंक गॉड कि हमने 1 आवर जल्दी पहुंचे, और मान के चलो उसमें हम 1 घंटा जल्दी नहीं निकले थे और हमारी फ्लाइट मिस हो गई, तो वी लर्न कि हमें दोबारा इतना मार्जिन रखना चाहिए अनसर्टेनिटी का। एग्जाम्पल, सो हमने अभी तक लाइफ में वैसे ही अचीव किया है, बट फॉर द बिगर गोल आपको ये कॉन्शियसली ये बात को ध्यान में रखना है, 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। 7 ट्रेड्स फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए 7 ट्रेड्स क्या होते हैं, आई एम श्योर आप सब लोग एक्साइटेड है उसको जानने के लिए। वन शुड बी वेरी पैशनेट टू अचीव देयर गोल for their success. Yes or yes, dear friends? If you are not passionate, you will not achieve your goal. आप just declare करते हैं, but it's like a burning desire. It should, desire and burning desire has a vast difference, right? So you should have passion. Passion means, suppose for me, passion, I'm so passionate to create the courses, to teach and deliver. I have created 250 meditation scripts, and I'm going to record, and I don't have that time to do that, so I have given a calendar, 4 a.m. morning I will record that every day, one video, one meditation script. So I'm so passionate, so I can find the way. So are you passionate about it? Whatever you want, precisely you want in your life, it is very, very much required. It is like a fuel. Passion is a fuel, so if you don't have a fuel in your car, you cannot run your car, you cannot enjoy the कार का जो ड्राइविंग, कार के साथ का जो ट्रैवलिंग है, you cannot enjoy. So this is like a juice and meaning and fuel in your life, dear friends. So passionate, it's a first trait to achieve the goal for success. And then second is belief. What do you believe? Whether आप मानते हैं कि आप अचीव कर पाएंगे तो you are correct, and if you believe you are not able to achieve, then you will not get it, very sure. So आपकी belief बहुत important है. How many of you have seen that lesson number 3 YouTube के अंदर मैंने जो दिया है, जिसमें मैंने 0 to hero 1 मिनट में कितने जीरो बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक एक्सरसाइज करवाई है, जस्ट आपकी बिलीफ सिस्टम को बूस्ट करने के लिए. बिलीफ बूस्टर्स एक्सरसाइज है, 0 to hero एक्सरसाइज है, अमेजिंग एक्सरसाइज है. व्हाई? बिकॉज हमें बहुत सारी ऐसी बिलीफ होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं इतने टाइम में ही कर सकता हूँ, ये तो मुझे नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह. सो आपकी जो भी बिलीफ है उसको और ज्यादा पॉजिटिव तरफ मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और पॉजिटिव बिलीफ है तो उसको और ज्यादा एनहांस यानी उसको स्ट्रेच करने के लिए वो एक्सरसाइज जरूर से कीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट 0 to hero exercise in the lesson number 3? If you have seen it and if you have done it, you will get the results and you will get the idea, dear friends. So this is a very important. आप जो भी गोल आपने तय किया है उसके लिए आप हकदार है और वो आपको मिलेगा, ये बिलीफ आप में होनी चाहिए. If you are declaring goal and you are very clear like you will not get it, it is not at all possible, but fancy way I have just declared the goal, then of course you will not get it. You are correct, you will not get it. So have a faith and just follow your intuitions, because this is first and foremost conditions of your subconscious mind. How many of you agree with this? Just type that agree, dear friends. And the trait number 3, strategy. I'm sure you are learning, right? Just type that learning, dear friends. I know today is a lot of so many topics are there, and I'm just going maybe fast. If you have any questions, you can ask. Or if you are learning, just type that yes, I am learning. Just type that I am learning. Yeah, just type that I'm learning. All right, dear friends. So strategy. Now if you have action, but if you don't have a strategy, आपके पास action है, belief है, but आपके पास strategy नहीं है. स्ट्रेटेजी यानी कि कैसे आपको गोल अचीव करना है. यू हैव सम एक्शन प्लान, देन ओनली स्ट्रेटेजी के बगैर. स्ट्रेटेजी यानी ऑर्गेनाइजिंग योर रिसोर्सेस. ऑर्गेनाइजिंग योर रिसोर्सेस यानी कि एग्जाम्पल
फॉर मी लाइक अ स्ट्रेटेजी, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरा फाइनल अल्टीमेट गोल क्या है, मेरी अभी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. आई एम रिकॉर्डिंग 5 videos a day, और total 25 videos a week. I conduct the 2 live classes a week. And what are the other strategy I'm going to write the book or applications I'm developing. And so these are the strategy. And कौन से कोर्स मुझे करने हैं या कौन सी किताबें पढ़नी है, and कैसे कंटेंट डेवलप करने हैं, and lot of things. So you have to have a strategy. This is just giving you immediate examples of my life. बट आपका जो गोल है, आपका जो जॉब है, प्रोफाइल है, टाइप्स ऑफ गोल है, उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए. इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रेटेजी, द ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट हम डिजाइन करेंगे 21 डेज के अंदर, वैसी ही ये ब्लूप्रिंट नहीं है. सक्सेस के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट, सिंपल आप घर बनाते हैं, सो आपका आर्किटेक्चर आपको पहले पूरा प्लान देता है 2D एंड 3D में. इवन इफ यू आस्क फॉर 3D प्लान or at least 2D drawing, then only you will get the idea, okay, कि मुझे मेरा घर का कैसा चार्ट रहेगा और मैं कैसे इसका इंटीरियर बनाऊंगा. if it is even the 3D design, that's called the blueprint. So you should have a strategy. आपके पास बहुत सारे resources है, external and internal, but if you don't have organizing your resources, then you will not get the results, dear friends. I'm sure if you believe you will get it, but you don't have that strategy to do that, then you will not get the result. Wonderful. Thank you so much for participating. And the fourth trait of the successful people is clarity of values. जितने भी लोग successful people हैं, if they have a strategy, even they are very aware about and conscious about and clear about their values. See, values very important है. As I already told कि मुझे कोई सक्सेस चाहिए, बट मेरी सक्सेस के कारण किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, या मैं कुछ अनएथिकल नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है. राइट. सो व्हाट इज राइट फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो. सामने ये भी हमें देखना है, तो ही जाके आप हर एक सक्सेसफुल पीपल, आई एम टॉकिंग लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो आपके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स होने बहुत जरूरी है. सो क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज in your life. Example, honesty. For me, my values is I always deliver, under commitment over delivery. These are my values. So this is my values, and many other values I have adopted and created. So आपको आपके वैल्यूज के बेस पर ही आपको सक्सेस मिलती है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर, and you know your values already, that is there in your mind, provided you should define on paper if you haven't defined yet, if you could not identify yet. And if you define on paper, then may be possible कि आपको उसमें change करने जैसा लगता है तो आप कर सकते हैं. Sometimes if you are not defining on paper, what happen, if you are not penned down and we are not able to identify, then sometimes it happens कि हम लोग कुछ सक्सेस हासिल करने के लिए शॉर्टकट या इनएथिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. इनएथिकल इन सेंस ऑफ इट इज गुड फॉर मी बट इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर अदर्स. इट्स अ विन लूज प्रोसेस हो सकती है. सो प्रोवाइडेड you should have a value, clarity of values, right, dear friends? So that is a very important thing. And the fifth trait is energy. So this fifth trait, energy के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको ये 4 बातें बता दूं कि this जो फोर्थ क्वाड्रेंट आप ड्रॉ करते हैं, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज, स्ट्रेटेजी, बिलीव एंड पैशन, this 4 is inseparable from each other. ये एक दूसरे से इंसेपरेबल है. पैशन के बगैर पैशन है बट बिलीफ के बगैर वो अचीव नहीं होता. बिलीफ है बट स्ट्रेटेजी, we need a strategy and clarity of value. These 4 parts, like 4 quadrants, and it is inseparable, it is interconnected, एक दूसरे से connected है. And based on this 4 very strong pillars only you will get the success, dear friends. So mind well, this is very important. And then now additional 3 traits is the 5th, 6th and 7th, and the 5th is energy. Of course, we need a mentally, physically, spiritually and emotional energetic. We should be energetic. So physically more, of course, mentally also,
and emotionally also and spiritually also. We should be very powerful, energetic, you know. So this is also very much required. It is also again the fuel. Energy is a fuel. I'm talking energy in sense of always in a power, always in a action mode, always in a positive mode. So that is very much required. You have seen so many people, they are always happy and always ready to do the positive things and this way. So that physiology and energy you will learn a lot. I have already you know, recorded a lot of video, and in the future also I will record advanced videos of the NLP जहाँ पर physiology के बारे में मैं सिखाऊंगी. You will learn there also a lot. You know, deliberately if you can create the energy through the use of physiology, you can change your internal world. That's called the NLP is all about. In the next week I will teach you what is exactly NLP in a summary. मैं आपको एक छोटे से समरी में भी कंप्लीट एनएलपी के थोड़े बहुत टिप्स, टेक्निक्स एंड समरी देने वाली हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे, और वहां पे बहुत सारे हैंडी टूल्स एंड टेक्निक्स भी देने वाली हूँ. बट एनीवे, एनएलपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोलॉजी. इफ यू आर डिप्रेस, दैट मीन्स डिप्रेस पीपल की फिजियोलॉजी देखेगा, बॉडी लैंग्वेज देखेगा, उनका पॉस्चर देखेगा. एंड इफ यू चेंज देयर पॉस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोनालिटी and breathing pattern, then automatically उनका internal world भी change हो जाएगा. So that's where deliberately also you can do it, and that's the NLP. That's what the game we can change through this physiology. But that is somehow another topic with the part of NLP, of course, but energy, of course. But for now, energy, energetic, mentally, physically, spiritually, and emotionally, it is required to fulfill your goal. If you're not excited and enthusiastic and energetic for your goal, then you will not achieve your goal anyway. So now the sixth trait is also very important, that is a bonding power. Bonding power means this person, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो अचीव करते हैं उनके गोल, उनमें ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, बॉन्ड विद अदर्स एंड विद वन सेल्फ. इट्स कॉल्ड द रैपो बिल्डिंग. रैपो बिल्डिंग का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, पूरे लेसन्स के साथ, और एडिशनल एडवांस रैपिड बिल्डिंग भी मैं विद लॉट ऑफ एक्सरसाइज आई विल अपलोड इन फ्यूचर. यू विल बी अपडेटेड डेफिनेटली. So anyway, you should learn to build a rapport. Rapport building is very scientific. You can learn step by step. Some किसी के naturally होता है, or otherwise you can learn. It can be developed. It is a skill you can adopt. It can be developed. So, but this is very important. If you don't have that ability to bonding power, you know, with others and with your own self, then you will not get the success. Because जो भी successful people है, the sixth trait is very important कि उनके पास एक bonding power capacity होती है, ability होती है, बहुत अच्छे से वो रिश्ता बना पाते हैं, वो बॉन्डिंग होता है. आप देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट और एनी सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, आई हैव रेड समवेयर, आई कैन गिव यू एन नंबर्स ऑफ एग्जांपल कि देयर इज अ वन बुक फ्रॉम द public speaking book. There is a Dale Carnegie book, and it is written there, maybe in the first 15 page only I have read, if I am not wrong, कि भाई एक एग्जाम्पल था कि मैनेजर है कंपनी का, जो एक कैबिन में बैठता है और उसको लाखों का पगार मिलता है, और लाखों वर्कर है उनके नीचे, उनको सबको थाउजेंड्स में पगार मिलता है. सो ऐसा क्यों? So that's a simple way how to win the friends and influence the people. Dale Carnegie, it's a very popular book, and I'm sure everyone has known or maybe read about that. And what the answer what the author has written, that Dale Carnegie has written, just because of that person has the ability to manage the people. You know, manage the people very nicely. And manage the people means bonding the power. उसको टीम बिल्डिंग में लेके उनको मैनेज करने की जो एबिलिटी है, जो बॉन्ड है, जो डेवलप कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई he is paid for that, right? So that is a wonderful things one should develop, or somehow we have naturally we should identify, and हमें उसको और ज़्यादा sharpen करने की ज़रूरत है.
Yes or yes, dear friend. Just type that yes. And that is a very important things and very, 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 very last traits. And that is what I believe a lot. And that's what the master of communication. How many of you agree that communication is a real currency? Just type that CC if you agree. Communication is a real currency, dear friends. If you have a lot of idea, passion, strategy, action, but if you don't have that communication skills, if you are not communicate properly with the people, and not only communicate with the others, with communication with your own self, and ये दोनों harmony में होना चाहिए. Communication with your own self and communication with others वो different भी होगा तो it will conflict. Even in that I'm talking about in the sixth trait also, bonding power में भी आपको ये देखना है. In overall भी successful people में यही है कि if you are telling something and if you believing something, you will not get the result. वो दोनों एक दूसरे के साथ harmony में होना चाहिए. Otherwise you will not get the result. So people will get that कि आप बोल कुछ रहे हैं और बता कुछ रहे हैं. So communicate, how you communicate with your own self, और आप वो बाहर कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो दोनों बहुत जरूरी है. कम्युनिकेट विद अदर्स एंड वे वी कम्युनिकेट विद आवरसेल्व्स अल्टीमेटली डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स. So this communication is a power you should adopt. And communications inside, there are the two way of communication. One way in the communication inside is how you feel, how you visualize, how you listen. There are the main three things: bodily, kinesthetic, auditory, and visual communication. When I'm talking, there are the two way of communication. One way is body inside communication, inner communication, and that is through visual, through bodily kinesthetic yani experience, and through auditory yani listen. So three way we communicate with our own self inside the world, like a little voice or inner voice, right? So there is a three way. And for the outside communication, like our body gesture, posture, tonality, then facial expression, breathing patterns, and words what we use. So this way we communicate with the outside world. So there are the two way we communicate. And complete NLP इसी के ऊपर है कि how we change the external communications के जो टूल्स मैंने आपको भी बताए, एंड वो सब मोडालिटीज जिसको कहते हैं, एंड जो इंटरनल कम्युनिकेशंस की जो सब मोडालिटीज है जो नेचुरली है, वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड एंड वी आर यूटिलाइजिंग दिस सब मोडालिटीज एंड वी जस्ट चेंज दिस सब मोडालिटीज एंड वी कैन गेट द रिजल्ट व्हाट वी वांट. तो जैसे हमें चेंज करना है हम कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक कि हाउ वी change this सब modalities. like a film director होते हैं, वो कैसे अपनी मूवी, हॉरर मूवी है तो वैसे उसमें म्यूजिक और सीन्स ऐड करते हैं, डार्क या लाइट या पैनोरामिक और 3D ऐसे इमेजेस देते हैं जिससे हमें वो और ज्यादा हॉरर वाला लगे, डरावना लगे, या ट्रेजेडी लेना है या वैसे म्यूजिक, या तो साइलेंट बना देना है. तो अकॉर्डिंगली ऑल दिस सब मोडालिटीज फिल्म डायरेक्टर दे आर वेरी क्लियर कि उनको क्या दिखाना है, अकॉर्डिंगली वो पूरा बना. सब मोडालिटीज जो यूज करते हैं एनएलपी टर्म्स में मैं कहती हूँ, तो वैसे उसको हम जैसा भी चाहे मेंटल पिक्चर के ऊपर इनर पिक्चर कैसे हमें सब मोडालिटीज को चेंज करते हुए बनाना है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे चेंज करना है. It's all about the communication. You will get that mastery also. Next week I will teach you more about communications, summary of the NLP, and many tools and techniques so that you can use easy way and quick way this NLP. But now most important thing is, my dear friend, आप सब लोगों को सारे वीडियो देखने हैं जितने भी हम पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, dear friends, and असाइनमेंट जरूर से करने हैं.